आपकी ऑडियंस जो है वो पैसे दे रही है, एंटरटेन होना चाह रही है, जा रही है वहाँ पर आपको देखने के लिए. सो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश रहें सेट पे एटलीस्ट जब आप काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई रियली बिलीव इन. मेरा मूड खराब भी होता है तो आई डू थिंग्स टू पेप माई सेल्फ अप. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं आगे जाके ये नहीं चाहती हूँ कि ऑडियंस को नहीं पता होगा ना कि अच्छा इसने ये सीन शायद खराब इसलिए किया क्योंकि इस दिन इसकी लड़ाई हुई थी. They will not know. They will not know what I'm going through at that point. कहीं सबटाइटल में भी नहीं लिखा हैगा कि आज हीरोइन का मूड खराब था. मेरे से लोग बोलते हैं मैं कॉमेडी कर रहा हूँ. अभी मतलब मुझे पसंद है कॉमेडी करना, मैं कर रहा हूँ. मुझे But you want to do something else also. I want to do thrillers also. And a lot of interviews thought कि मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूँ उनके और मेरे बीच में. Which is not true कि अच्छा एक ये फिल्म हिट हुई है तो उसके बाद ये चेंज हो गया. Which was not the fact. मैं लुका छुपी जैसे ही स्टार्ट हुई है, इसका जब से ट्रेलर आया, started the even before the promotion I started giving interviews जिनके बचे हुए थे कि यार let's do it. Let's do it. Yeah. So that is something which was not a boundary. So you were not being arrogant. I didn't have anything to talk about. I don't think people thought you were being arrogant. They just thought you were trying to be aloof. I am trying to be aloof, which wasn't the case. जब से सोशल मीडिया आया है और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है सोशल मीडिया, I feel you are judged way too much. Hello everyone and welcome to It's Entertainment. I'm Sakshma and today I have with me Kriti Sanan and Kartik Aryan. Welcome. Thank you so much. I have to say you guys are a very good looking couple. Like individually of course, both of you are good looking, but together aesthetically it's a very nice couple. I'm sure you guys have heard that. We have actually while we were filming. Yeah. एक एक्टर के लिए किसी को हंसाना सबसे डिफिकल्ट काम है. Why do you think it's the most challenging thing? Because when anybody watches a film, mostly they want to be entertained. That is the whole purpose of watching a film. Why do you think this is the most difficult job for an actor? I mean, it is difficult. I think comedy is something which can be natural or unnatural. I mean, it's something which एक सीन आपको क्योंकि पता होता है कि इसमें आपका इफेक्ट है हंसाना लोगों को, बट एट दैट मोमेंट यू आर नॉट trying to be funny, but it's the situation which is actually funny and it's the which you already know about. You know, तो उसका मज़ा आप already एक बार ले चुके हो as an actor, but then when you're performing, it's the most difficult thing to do because वो थोड़ा सा भी इधर गया, थोड़ा सा भी ऊपर या नीचे हो, there's a thin line. हाँ, it's all about the timing, it's all about coordination, it's all about कि सामने you shouldn't come across as you're trying to be funny. तो वो चीज़ काफ़ी दूसरे क्या बोलते हैं जॉनर्स में या किसी चीज़ में इतना थिन लाइन नहीं होती है, जो कॉमेडी में बहुत ज़्यादा होती है. कॉमेडी में ये मतलब ज़रा सा भी ऊपर नीचे हुआ you're there, मतलब you're not, ये it becomes lame. Suddenly वो इतना अच्छा भी जोक हो लेकिन वो पीजे हो जाएगा. किस तरह से हमारा वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है. किस तरह से बोला. So I think a lot of rehearsals are also required, or I don't know. Not always. That you'll tell me. Depends on the. I think I go with the makers. उनके हिसाब से कि क्या उनको चाहिए. It depends on them mostly for me. And otherwise it totally is on the script also. On the script also. Yeah. So but you also said that you have to be happy to do a film like this because the energy the audience catches. Do you think anyway this is a challenge to do a comedy film? It becomes a mammoth task if suppose you are not in that frame of mind because we're all human. We have bad days. Do you think it's so hard those days? Talk about delivering a scene like that on a day when you are battling your personal demons. I think मैं हमेशा ये सोचती हूँ that a film is going to be there forever. It's something once you've shot, it is going to be out there forever to be judged. It's not only when it's releasing. बाद में भी बहुत सालों बाद भी वो होगी बाहर. तो आई फील और आपकी ऑडियंस जो है वो पैसे दे रही है, एंटरटेन होना चाह रही है, जा रही है वहाँ पर आपको देखने के लिए. सो आई फील इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप खुश रहें सेट पे एटलीस्ट जब आप काम कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई रियली बिलीव इन. मेरा मूड खराब भी होता है तो आई डू थिंग्स टू पेप माई सेल्फ अप. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं आगे जाके ये नहीं चाहती हूँ कि ऑडियंस को नहीं पता होगा ना कि अच्छा इसने ये सीन शायद खराब इसलिए किया क्योंकि इस दिन इसकी लड़ाई हुई थी. They will not know. They will not know what I'm going through at that point. कहीं सबटाइटल में भी नहीं लिखा हैगा कि आज हीरोइन का मूड खराब था. And people don't even talk about it on camera. Yeah. So I think it's very important कि आप और I feel energy transfer होती है. मतलब it will get transferred to him also if I'm working with him. तो अगर मैं बुरे मूड में हूँ और मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हूँ तो उसका सीन भी खराब होगा. So I think it's unfair. Have you faced that ever? You don't have to name anybody or any project, but imagine you but I'm the kind of and this actor is in a very bad mood. You're like, "Hey yaar,
क्या होगा chemistry का? No, I think I mean I'm also human and I understand कि ऐसा होता है and it's okay कि ऐसा हो. It's okay कि किसी का मूड खराब है, लेकिन मैं उनमें से हूँ जो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसका मूड अच्छा कर दूँ अगर मैं कर सकती हूँ तो. That's very nice. तो I'm one of those कि I'll start chatting or I'll start like Distract them. या कोई ऐसी बात कर लो या कभी-कभी कुछ लोग होते हैं जिनसे अगर बात कर ली कि क्यों मूड खराब है and they've spoken to somebody they might be fine. Yeah. So I try and like be friendly and just That is just very chill out, understanding is very important. It is. Also, Luka Chupi is shot in Gwalior. You are from Gwalior. Yes. Tell me, when you were roaming those streets in Gwalior, when you weren't an actor, with dreams in your eyes, now going back with, say, a percentage of those dreams that have come true. Yeah. How was it going home with becoming the man that you wanted to become? It's been an amazing experience. Yeah. It was an amazing experience when we were shooting in Gwalior. Yeah. I mean, because it's a city where I dreamt of becoming an actor, and it's the same place जहाँ पे हम लोग shoot कर रहे थे after becoming an actor. Yeah. And also it was something कि वो film की शूटिंग उन जगहों पे जहाँ पे हो रही थी वहाँ पे कुछ ना कुछ याद Memories आता of रहता your- था, मेमोरीज आती थी Okay. कि यहाँ पे मैं फ्रेंड्स के साथ था, ये फोर्ट पे हम लोग खड़े होते थे या फिर संडे की रात को हम लोग यहाँ पे बैठ के चिल करते थे. तो वो जो And you must have never thought. नेवर थॉट ऑफ इट कि जब हम लोग तब उस टाइम बातें करते थे कि यार लाइफ में कुछ ऐसा करना है या वैसा करना है, और आज एक्चुअली उसी जगह पे जाके शूट करने का मौका It must मिल be रहा है. emotional. It was emotional. It was sometimes it felt like वो goosebumps आते हैं ना सोच के कि यार It it's just so. adds to the whole feel as an actor also. It adds. True. I mean, like my mom, dad, they were overwhelmed with all the love they'd seen. Did they ever like visit the sets when you were getting the shot? They were visiting the sets constantly. They were getting homemade food. I couldn't फिर stay. तो सबकी पार्टी हुई होगी ना सेट पे? No. हम लोग साथ में ही खाते थे तो हम लोग yeah, we've had a lot of rasmalai. हाँ रसमलाई एक जगह थी वहाँ पे बहुत famous. This time I'm happy Kriti you got the food because for Bareilly ki barfi you were fighting with Ayushman because he used to get food from one of the actors on the set. You were like मुझे खाना नहीं दे and all that. No, once again he had put out some auntie around the house that we were shooting in. Yeah, and she, Not an actor, an auntie around padosan, Smart. some padosan of Yeah. the house that we were shooting in, और मुझे पता ही नहीं था कि उसको खाना मिल रहा है वहाँ से. and he did that the entire schedule. Yeah. And then in the और interview किसी को she's नहीं like बताया. In the मैं interview- ऑर्डर करके खाती थी और तुम Yeah, And तुम he's घर like, का खाना खा रहे थे. but that's you should learn. It's a learning curve. Yeah. That सबसे दोस्ती करो. ये जहाँ but से- ये बहुत अच्छा This खाना time you लेके आता learned. था. Yeah. Yeah. Also coming back, Anil Kapoor was there on the show like last week or Total Dhamal, and he said that when you are a very experienced actor, when you've done like so hundreds of films, it's the audience gets they're not surprised anymore because you've done everything, so it's hard to reinvent. But with newcomers who've done lesser number of films, it's easy to surprise the audience because you've not attempted everything. So anything you do, it's nice, seems nice to them. Do you think it's easier to surprise the audience or it's actually not? I think it's a bit of both depending on what you're doing. Like for example, अगर मैंने कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया और मैं वो कर दूँ और मैं अच्छा कर दूँ, तो वो मुझसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा. Yeah. बट अगेन अगर मैं ऐसा जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बरेली की, अब मैं लुका छुपी कर रही हूँ तो मुझसे कई बार लोग पूछ रहे हैं कि अरे ये सिमिलर लग रहा है, यू नो स्मॉल टाउन है, स्मॉल टाउन है लेकिन कैरेक्टर अलग है ना. Yeah. सो आई फील लाइक समटाइम्स जॉनर भी रिपीट हो जाता है तो देयर लाइक कि you know it feels like what you did in Bareilly. Maybe it's because you were a strong lead in that and you're strong here also. You're dominating the male as actor. No, it's Mentally, like I mean. it's the character. I think for The me, thought I know कि बिट्टी और रश्मि में बहुत डिफरेंस है. तो आई फील वो ऑब्वियसली एक ट्रेलर में देखने को इतना नहीं समझ में आता है कि क्या कैरेक्टर है. बट अगर आप थोड़ा सा भी जॉनर में रिपीट कर रहे हैं, yes, when you're less experienced as an actor, आपने कम काम किया है, तो there is so much more that you can try. Yeah. And when you're experienced, they already like I want to see Shah Rukh Khan romantic. Yeah, he No matter keeps what he's saying doing. that. See, you're Yeah, an example. yeah, Even I- people want yeah, to see. I want and to he's like, see when I him do it, people say, ये तो यही करते रहते हैं हमेशा. So yeah, What a dilemma. that is there definitely. I think Anil sir is right about He's right. it. So yeah, the conclusion is he's right. No, about he it. might have a different answer. No, same. You agree with it completely. Okay. I also wanted to ask you, Kriti, like I keep telling you, you are aesthetically perfect. You fit into the conventional, idea of beauty, what do you say, tall, fair, beautiful, angular structure. You also have a very,
intellectual appearance on camera. You know, you're not what they call a bimbo. You know how to communicate, you're intelligent. So I want to ask you, are there still any insecurities or inhibitions which every normal person has? Insecurities and inhibitions. As a person. Of course there are. I mean, of course there are days when you know I know I'm looking tired because I've worked a lot, and there are times when you know I'll tell. So there are magic tricks with hair makeup that you can do, and you know yeah. So there are days when I can tell you know my hair makeup people that. So I have a thing that you know when I lose weight, when I'm working a lot, I tend to lose weight very fast, especially on my face. Yeah. And because of that angular structure that you're talking about, it completely goes in. Okay. So it's a problem. It's a problem, but you've got amazing cheekbones. I think half of us want that. Yeah, so सबका अलग होता है ना. It's the grass is always greener on the other side. That's so true. Yeah. So the grass is literally green on the other side. There are times when I'll tell them, you know, give me like a little volume on my hair, so there's a delusion of me not looking so tired. So all that is there. And but those are the only insecurities that you have. No, yeah, I think for day me, to day. As an actor also, I mean, there are insecurities. Your fate changes every Friday. No matter how you look, it doesn't matter. How your film performs. Not anymore, actually. Yeah. It didn't. I mean, it was the case with some actors before, but now the audience is too intelligent. Yeah, I think it's more about how you're performing as an actor, what kind of films you're doing, how your films are flaring. You know, are you connecting with the audience or not? Yeah. So I think, you know, your fate changes. It's an insecure profession. Yeah. So you can't be secure Ever changing. Yeah. The graph. Yeah. What about you, Karthik? Any kind of insecurities and inhibitions? You call the national crush of India, by the way, right now. I hope you know that. National crush of India के क्या insecurities हो सकते हैं? National crush के You didn't know insecurities. that. Please don't tell No, me. I've read about it. Yeah. Of course I've read. And I'm thankful कि ऐसा tag भी मिल रहा है. वो बहुत बड़ी बात है. मैं इतना deserving नहीं हूँ. But अरे, so modest. So modest. But what do I think about insecurities, inhibitions? I think मेरे को बस ये लगता है कि मेरा काम पसंद आता रहे लोगों को. वो एक कई बार मेरे को इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा ना लगे कि यार इसको काम नहीं आता. कभी ऐसा वो कनेक्शन ना चला जाए ऑडियंस के साथ. थैंकफुली टचवुड मतलब ये एक हमेशा फर्स्ट फिल्म से जब से पंचनामा 1 से एटलीस्ट ये एक कनेक्ट जो मेरा रहा है ऑडियंस के साथ, वो एक डायरेक्ट कनेक्ट रहा है कि ये हमारी बात बोल रहा है या फिर ये हम में से एक है. Because of the monologues or or the kind of characters that have been portrayed on screen. तो वो एक चीज़ है जो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है, मैं वो लूज नहीं करना चाहता हूँ. तो वो एक इनसिक्योरिटी कि कभी वो रिलेटेबिलिटी मेरी ऑडियंस के साथ ना चले जाए. तो But you know, like you were saying, reinventing in every genre. प्यार का पंचनामा, both, and even Sonu Ki Tittu had the same sort of genre, but you still managed to connect and even more with each film, which is great. Yeah, I mean, nobody said कि ये तो देखा है, ये क्या है? They were all like because उसमें वो characters फिर भी different हो रहे थे या stories different हो रही थी. वो ऐसा नहीं था कि पंचनामा 1 अगर आप देखो या सोनू के टिट्टू की स्वीटी या 2 जो भी आप देखोगे तो उसमें कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग हैं. इनफैक्ट मेरे अलावा दूसरे कैरेक्टर्स भी बहुत अलग अलग हैं. हाँ, तो सबके कैरेक्टर्स अलग थे, सबकी स्टोरीज बहुत अलग अलग रही हैं. तो आई थिंक दैट्स द रीजन. अदरवाइज फिर तो वही चीज़ अगर आप दिखा दो वही मैं मोनोलॉग भी बोल रहा हूँ वहाँ पे पंचनामा 1 पे भी 2 पे भी, लेकिन दोनों वर्क की है. तो वो बिकॉज द वे द फिल्म्स वर रिटन, द वे द कैरेक्टर्स वर रिटन एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ रीजन कि वो कैरेक्टराइजेशन में डिफरेंस होने की वजह से वो कनेक्टिविटी रहती है. जो एक ऑडियंस के साथ रहती है कि एंड हम आपस में कितना भी डिस्कस कर ले कि मतलब इन द इंडस्ट्री आई एम सेइंग कि अरे यार कुछ बहुत ही अलग करना है, बहुत ही अलग करना है, लेकिन आई थिंक स्मॉल थिंग्स, सटल चेंजेस इन योर कैरेक्टर्स वो ट्रांसलेट होता है. कुछ ना कुछ करके वो सबकॉन्शियस लेवल पे बैठता है कि यार ये कुछ सही कर रहा है इसलिए फिल्म देखने जा रहे हैं, या सही कर रही है तो इसलिए फिल्म देखने जा रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स द रीज़न. अभी लुका छुपी मतलब मेरे से लोग बोलते हैं मैं कॉमेडी कर रहा हूँ. तो अभी मतलब मुझे पसंद है कॉमेडी करना, मैं कर रहा हूँ. मुझे आई वांट टू डू थ्रिलर्स आल्सो, बट नॉट बिकॉज मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ तो इसके लिए मैं थ्रिलर करूँगा. मेरे को पसंद है शायद से कि मैं थ्रिलर जोन में कुछ करना चाहता हूँ, मैं बाजीगर करना चाहता हूँ अगर वैसी हो, या डर कर तो यू नो मतलब हाँ. लेकिन आई एम सेइंग कि ठीक है वो वैरायटी मिलती है उससे एज एन एक्टर भी, बट मेरे लिए हर स्क्रिप्ट नई है, मेरे लिए हर कैरेक्टर नया है. कैरेक्टर सेम नहीं करूँगा,
वो थोड़ा थोड़ा एक डिफरेंस लाता But रहूंगा. anything like she said कि मुझे शाहरुख को अब रोमांस में ही देखना है. Maybe the audience has the They same. really wanna see me in उससे comedies. उससे डर नहीं लगता कि अरे मैं मुझे करना I है. am glad कि मैं मेरी करूँगा तो क्या I am glad कि relatability है मेरी उनके साथ, मैं उसको क्यों लूज करूँ? Yeah. क्योंकि कुछ लोग मुझे बोल रहे हैं कि don't do comedies. मैं That's true. you know But like for a while you can always like. no, I will do this also and I'll do that also. Yeah. I'll Yeah, keep why not? yeah Balance it out. balance it out ना कि मैं कुछ और जॉनर भी कर लूँगा और ये भी करता रहूँगा. Yeah. लेकिन इसमें मुझे भी मजा आ रहा है और ऑडियंस को भी मजा आ रहा है. So that's the reason I think Yeah. win-win है. Yeah. Win-win है सबके लिए. Also, lastly, at the press conference, you said the trailer launch. You said that I drew a certain boundary around me because there was so much written. Yeah. I'm not going to get into what was Yeah, written. yeah. But you think the media is getting too over analytical? Because I literally see with actors and actresses, when you step out of the airport or something, everything has to be prim and prime. Tomorrow, if there's something in the teeth, they literally draw circles and it's posted on every kind of media group. Do you think it's very irritating at a point? No, so my thing was at the trailer launch when I said that कि I wasn't purposely giving interviews post Sonu because post Sonu there was so much news. Suddenly I wasn't used to all this news. पहले मैं चाहता था मेरी news आए, लेकिन मैं ये used to नहीं था. मैंने सडन बर्स्ट ऑफ माई न्यूज़ कि मैं यहाँ पे भी हूँ, वहाँ पे भी हूँ, इसमें भी आर्टिकल आ रहा है किसी चीज़ में. But it wasn't what you wanted to be written, you're saying? Not really, मतलब but it wasn't something which was in my control. Yeah. It was coming out of कि हाँ यहाँ पे दिखा तो इसकी कुछ न्यूज़ आई, वहाँ पे कुछ कोई फिल्म की बात हो रही है तो वो भी न्यूज़ आ रही है. But they were not because of the fact कि मैं कुछ आ रहा हूँ, मैं अगर 50 फिल्म कर रहा हूँ उसमें से कोई न्यूज़ आ रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, कहीं से इधर से कहीं से निकल रही है, कुछ हो रहा है. एंड दैट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ एक्टर्स, विद अ लॉट ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स. बट मैंने इंटरव्यूज़ के लिए इसलिए थोड़ी सी बाउंड्रीज क्रिएट की थी बिकॉज मेरे पास कुछ बात करने के लिए था नहीं. You want to talk about apart from अभी films? सोनू हो गई, रिलीज हो गई, हिट हो गई, जो भी सक्सेस हुआ, उसके बाद 2 महीने 3 महीने बाद मैं फिर से उसी के बारे में इंटरव्यूज करूं. इट डिडंट मेक सेंस फॉर मी एंड अ लॉट ऑफ इंटरव्यूज थॉट कि मैं एक बाउंड्री क्रिएट कर रहा हूं उनके और मेरे बीच में, विच इज नॉट ट्रू कि अच्छा एक ये फिल्म हिट हुई है तो उसके बाद ये चेंज हो गया, विच वाज नॉट द फैक्ट. मैं लुका छुपी जैसे ही स्टार्ट हुई है, इसका जब से ट्रेलर आया, स्टार्टेड द even before the promotion I started giving interviews जिनके बचे हुए थे कि यार let's do it. Yeah. So that is something which was not a boundary. So you were not being arrogant. I didn't have anything to I talk don't think about. people thought you were being arrogant. They just thought you were trying to be aloof. I am trying to be aloof, which wasn't the case. Not It was just that कि I didn't want to be in a situation जहाँ पे मेरे पास कुछ बात करने को ही नहीं है. हम दोनों बैठेंगे तो अभी हम लुका छुपी के हम सब बात कर रहे हैं. Same question already answer कर चुके वो already answer हो चुके सारे question. तो वो था. कितनी बार बोलूं. And I love paparazzi. बस मेरे को अच्छे लगते हैं. तो ऐसा airport style और ये सब में. You have no choice but to love the paparazzi. It's going to be a part of your life. But I do feel that जब से सोशल मीडिया आया है और इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ है सोशल मीडिया, I feel you are judged way too much. Like sometimes it can be annoying because I feel like who are you to tell me thumbs up or thumbs down? Who are you to rate me? Like I want to wear what I wear, What? and if I've walked out normally Yeah. on the road, I'm not on red carpet, I'm not at an event, I'm not anywhere where I'm supposed to be dressed in a certain way. Yeah. If my dressing is something that you don't like, that's okay. That's your problem. Yeah, like I feel like you're trying to being please you. judged. Yeah, exactly. You want to dress up for yourself, yeah. I mean, you're and dressing maybe some- not for anybody. Let me be. Yeah, and it's not like you're dressed in the best manner always, no. Yeah. So I feel like sometimes you do feel कि यार what do you mean करो. by thumbs down? Like बस करो. आप क्यों जज कर रहे हो? तो आई फील कभी कभी होता है कि मत करो जज इतना. एंड आई थिंक लाइक सोशल मीडिया समटाइम्स नीड्स टू चिल अ लिटिल एंड यू नो नॉट Take a बी deep सो breath. नेगेटिव Mind their own एंड business. इट्स ओके टू नॉट हैव न्यूज़ एवरी मिनट गोइंग ऑन. You know, in general, like I feel there's so many platforms, and Yeah. you know, every minute it's like, अभी क्या नया करें? So sometimes there are things which are not relevant, Yeah. which also become क्योंकि relevant कुछ for तो no डालना है reason. type. Exactly. So आज that 5 sometimes आर्टिकल happens. करके ऑफिस से निकलना है. That sometimes क्या लिखूं? happens. Yeah. True that. And sometimes I feel like you don't want to be papped, and I feel you should have the privilege of telling, you know, the photographers कि अभी मत लो, अभी you know आज मत लो आज मतलब photo, You can't and avoid they should be okay with it. It's like before you even step out, the pictures are already getting clicked. Yeah. So वो भी एक टाइम आ yeah, जाएगा. yeah. And I mean there are Room के अंदर दिल. मेरा सैलो के अंदर हो चुका है by the way. I know. That's why. मैं सैलो के अंदर थी. I Yeah. have like I'm getting my hair colored for a film. They had and bugs I had, installed. I had that foil in my hair.
And there was a photograph bahar se through the door, glass door inside. And it went viral. So it's like Kriti getting her hair done. Like nobody gets it done ever. Such a Yeah. new thing that she's doing in life. Everybody should do it. so interesting. Yeah. So, don't be judgmental, don't be so negative. Let people be. We are all human Live and beings. let live. Live and let live.